the World Autism Month. Well, and we celebrate 2nd of April as the World Autism Day. On behalf of Baby Chakra, I am very happy to announce this live chat with Dr. Vikas and with Dr. Neha, who are with us as a panelist and will be addressing to our parents who would require awareness and support in regards to autism. So, what is autism all about? Autism is nothing but it is a condition where the child and the parent need a lot of counseling in regards to understanding the behavior of the child. To have a main insight onto what it is technically and to understand in a layman's language, I have with us Dr. Vikas, who will be addressing us on this issue. To you, डॉक्टर विकास, ये क्या होता है ऑटिज्म और ये कैसे पता चलता है पेरेंट्स को? देखिए, सबसे पहली बात है जो ऑटिज्म है, जितना इसको बना दिया गया है हवा उतना हवा नहीं है, तो हमें इतना भी ज्यादा नहीं सोचना है ऑटिज्म के बारे में। बट हर पेरेंट्स को पता होता है और प्रॉबेबली इन इंडिया हर पेरेंट्स कंपेयर करता है अपने चाइल्ड को दूसरे चाइल्ड से। तो द प्रॉब्लम इज कि उसका बच्चा चलने लग गया, मेरा नहीं चल रहा, उसका बच्चा बोलने लग गया, मेरा नहीं बोल रहा। तो ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हमारे माइलस्टोन अचीव होते हैं अलग अलग एजेस पे, हमें वो माइलस्टोन ध्यान में रखने हैं और उनकी एक रेंज होती है जिस रेंज का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो माइलस्टोन्स जो हैं, वेदर इट इज लैंग्वेज, वेदर इट इज सोशल इंटरेक्शंस, वेदर इट योर लोकोमोटर, जितने भी हमारे डेवलपमेंट्स हैं, अगर वो हमारी एज से डिले हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर एज रेंज के बाहर जा रहे हैं, देन वी आर कंसर्न मोर अबाउट ऑटिज्म। एंड बिफोर कोविड ऑटिज्म के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया, बट ड्यूरिंग कोविड बिकॉज जो बच्चे थे वो रिस्ट्रिक्टेड रहे अपने घर के अंदर, उनका सोशल इंटरेक्शन पुअर हो गया, उनका लैंग्वेज पुअर हो गया, फादर मदर दोनों वर्किंग हैं, वो लोग पूरे टाइम अपने लैपटॉप में बिजी हो गए। दैट इज वाई हम अभी जो एक स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, अभी एक बूम आया है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया है। उसका रीजन यही है कि बहुत सोशल इंटरेक्शन कम हो गया था, लोग बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, तो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो नाउ अब हमें पता लग रहा है कि हाँ ये चीज है, ये डिले है, इसलिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा कुछ शरारतें करेगा तो ऑटिज्म है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक वाइड रेंज है, इसलिए हम इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज कहते हैं। इसमें हर चीज हो सकती है, लैंग्वेज डिले हो सकता है, उसका सोशल इंटरेक्शन डिले हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर चीज होती है कि वो एक ही पैटर्न में उस अपने आप को जीवन व्यतीत करने लग जाता है कि उसको बस वही पसंद है और बाकी कोई चीज पसंद नहीं है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में कुछ चीजें पसंद नहीं आती हैं उसको। तो ये सब चीजें हैं, ये ऑटिज्म के साइंस हैं। तो इसके अर्ली इंटरवेंशन से हम लोग कोई चीजें ठीक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर विकास। डॉक्टर नेहा, मेरा सवाल आपसे था, जैसे कि डॉक्टर विकास ने कहा अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, सो कौन से एज ग्रुप में ये पाया जाता है और अर्ली इंटरवेंशन कब से शुरू हो जाता है? I request you to restate the question. Yeah, my question to you is that Dr. Vikas said early intervention is required, right? So I would like to ask you, at what stage we start with this early intervention, and how do we understand that a child has to be called into this phrase? And we know that in India, labeling a child autistic creates a lot of mental trauma for the parents. So how do we take it as in like a parents understand about all these things? Could you please help us over here? Yes. So autism is basically a developmental problem which actually comes up when feel that your child is somewhere very sensitive. Okay, if a parent experiences that the child is living in his own world, although as Dr. Vikas says, it's a spectrum. You cannot say that the child is at the highest peak is only autistic. Even if you're finding this little, I'm going to dictate a list of symptoms. अगर छोटे भी symptoms आ रहे हैं, तो समझने की जरूरत है that your child is entering into it, और हम फिर उसके early interventions करते हैं. But basically, when the parents comes to me and family want you to have on my child, which is called psychological assessment for autism.
So I basically ask them the 5 main basic questions, which are very important for parents को भी समझने की जरूरत है. One is, do you feel that your child is not on his or her name? एग्जाम्पल है आकाश और उसे नहीं सुन रहा है या 10 में से सिर्फ 2 बार सुनता है 8 बार नहीं सुन रहा है, then it can be a red flag that your child is entering into that problem, okay, entering into the spectrum, okay. Second, in terms of a repeated or a stereotypic toy is something that the child plays all the time, but if you feel that the child has very restricted interest in terms of toys, in terms of activities, in terms friends, in terms of communication, doing things again and again, then the child entering into autism. Third is all about if you feel that the child has a speech delay. When the child, usually every child has a phase of development, but when you feel that the child is almost 3, 2.5, but still not able to make a sentence, let's say words, khana khao, aa jao, then you are joining 2 words together. But if you feel that the child is just saying 1 word, that is also a mood. Papa on move. And it's actually there and talking to him, beta mujhse baat kar rahe ho, and the child is into his own world or playing on his own. This is a sign that the child might be entering into autism. Fifth important signal might be to feel that the child is not enjoying food, not sleeping well, and it is also associated with hyperactivity. When the parents come to say, मेरा बच्चा naughty है, अपने में लगा रहता है, मस्ती करता है, but there you need to understand that the basic instructions, if you tell them go and bring the ball, go and do that, अगर वो ये भी नहीं कर रहा है, then your child is entering, and these are the high red flags. It's basically a disorder जहाँ interaction और communication जाता है. Developmental milestones की डॉक्टर विकास बात कर रहे थे, जैसे चलना, बोलना, hand activities, gripping activities, these can be normally, हो सकता है अब पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं मैम नहीं मेरा बच्चा कार को बहुत अच्छे से समझता है, हम जब बाहर जाते हैं तो चप्पल फटाफट से पहन, से पता है कि that can be there. But if you feel that only interacting on his mood and his abilities, but not involving with the real world, his own world, that is a major setback and a major flag to the autism spectrum. And if we're talking about early interventions, the actual age for intervention starts somewhere at 2 to 3 years. If you are delaying more to 5 and 6 years and you feel अपने आप speech आ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, इतना क्या जल्दी है, then be a clinical psychologist and a child psychologist has to work more on therapy to get the child back into normalcy, the standard of normalcy. Okay, that was very informative. Understanding about the red flags, which become a distinction for the parents and makes them aware. So, Dr. Vikas, my next question to you is that once we understand the early intervention, the time when we are doing the therapy, and when it comes to putting it in school, okay, nowadays, as you said, social interaction was almost zero. In COVID, children did have a lot of trouble, and now when they are moving back to the school and the child is found to be autistic, now is it very true on the parental front that they should open up about their child, or just that they should keep it safe? One thing. Second thing is, if we tell it to the teacher and we tell it to the counselor and the principal, what kind of action from the school should be actually sorted to help the parents be mentally safe? They feel that even if the child is admitted in school, I should not worry. What would you guide on this? जहाँ तक आपने एडमिशन की बात की बच्चों की, तो हम ऐसे बच्चों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि दे आर नॉट अनफिट फॉर स्कूल, बस राइट, ठीक है ना. उन लोगों का कोई एक पार्ट डिले है जिसको डॉक्टर विकास आता है स्कूल टीचर. हेलो, यस सर, आर यू एबल टू हियर मी? यस यस. हाँ, तो दे आर नॉट अनफिट फॉर स्कूल, सो दे कैन डेफिनेटली गो टू स्कूल. वहाँ पे जो रोल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल है वहाँ पे उनके स्कूल टीचर्स का है. The problem in India is the school teacher are not trained to look for the developmental delays,
एंड ऑल दैट थिंग। तो हम लोगों को यहाँ पे उतना एजुकेशन नहीं है इस तरफ, लेकिन अभी धीरे धीरे एजुकेशन आने लगी है। तो जो स्कूल टीचर्स हैं वो उसको एक स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसे ट्रीट करेंगे, बट उससे एक जो उसका डेफिशिएंट पार्ट है उसको ठीक करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। जो अटेंशन हो सकता है किसी भी उसमें हो कि जैसे अगर वो सोशल इंटरेक्शन है तो द टीचर विल इंटरेक्ट मोर विद हिम और हर, तो वो ध्यान हमें देना पड़ेगा। अगर वो हाइपर एक्टिव है तो जैसे एडीएचडी हो जाता है बच्चों को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, तो अटेंशन डेफिसिट है तो सबसे पहले जो जिसको पता लगेगा वो टीचर होगा, कि टीचर को पता लगेगा कि हाँ वो बच्चा है वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है। हाइपर एक्टिविटी है वो टीचर नोट करेगा कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है। देन कम्स द पेरेंट्स। सो जो यहाँ पे जो स्कूल का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्कूल में एक गाइडेंस टीचर है जिनको एक बेसिक चीजों का पता है तो इट विल बी अ वेरी ग्रेटफुल हेल्प हमारे लिए भी एंड जो डॉक्टर नेहा है उनके लिए भी, क्योंकि जो इनके स्पीच थेरेपी है या बिहेवियरल थेरेपी है उसके लिए ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती है कि हमें पता लगे कि वो अदर जगह पे, जैसे घर के अंदर एक बिहेवियर है, स्कूल के अंदर अलग बिहेवियर है, तो हर बिहेवियर पता होना बहुत जरूरी है। Okay. Thank you, Dr. Vikas. Dr. Neha, I want to come to you on this aspect. See, we are always covering up for the child, but as a mother, मेरे मन में एक डर बैठा है कि मेरा बच्चा कैसे करेगा. So sometimes the mother becomes overprotective, kind of overpossessive, right? कभी कभार उनके पास कैपेसिटी होती है, उनके पास सपोर्ट सिस्टम होता है, वो बहुत स्ट्रांग होती है. कभी कभार वो उनका कॉन्फिडेंस वो दिखाती है कि शी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बट मन ही अंदर एक ऐसा ख्याल आता है, यार मेरा बच्चा क्यों. ये जो थॉट जब आता है एक माँ के दिमाग पे, तो वो उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर लेता है. तो इसके लिए हाउ शुड अ मदर स्टैंड letting go all her fears and help the child to bond in a better way? Very important question. I must say that this is something very much emotionally attached to the mothers and the community we are actually here for. See, basically when the parents comes to me and say, और ये question actually वो पूछता है, मैम मेरे बच्चे को ही क्यों हो गया? Because it happens. Because as a mother, you always assume your child to be the most naughtiest, playing with you, being with you, pampering you. और फिर हमें लगता है कि नहीं यार मेरा बच्चा मेरे इमोशंस को नहीं समझ पाता. ऑटिज्म trying to tell them understand it because they're stuck in their own world. So the mothers comes up and say, "Ma'am, मेरी तो ऐसी कोई गलती नहीं थी, मेरी तो डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है, ऐसा क्यों हो गया है? What could be the reason?" And I always tell them, it's not because of you. It's not at all because of you. It's a challenge to you as a mother कि तुम्हें थोड़ा सा अपने बच्चे पे ज्यादा काम करना है. And one answer I always give them, all the mothers who listen to us, autism it's not about your child IQ. यहाँ से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है. अगर आपको लगता है मेरा बच्चा दूसरे से पीछे हो गया और वो रिटार्डेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल अबाउट दैट योर चाइल्ड SQ व्हिच वी कॉल एज सोशल क्वेश्चन. IQ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन. So if you find your child SQ is hampering, हम उसको सोशली ट्रेन करके बेटर कर सकते हैं. And you know that the autism everything push which you call as a child independent. कि उसे कैसे काम करना है. Therapy not cure. Therapy are just shaping the child into normality. अगर हम 6 महीने भी मदर डेडिकेटेडली काम करती हैं और सबसे पहले से समझती है कि आपके फट से ठीक हो सकता है, आपको इतना परेशान नहीं होना था. It just because that you feel that the child is absolutely normal, accident हो गया. For example, strain in leg. तो क्या आप 3 महीने की मेरा बच्चा नॉर्मल क्यों नहीं है और जैसा क्यों नहीं है? It's just a challenge that you need to work little, give him little more years, give him little more smile, be there with them, involve with them, play with them more, and ultimately your child dies. And yes, it works. There are many parents who come, मैम पता नहीं ठीक होगा भी होगा, पता नहीं लंबा चलेगा. It's not like that. The early you work, the early will be their recovery. How lovely you told. The early you start, the early it gets bonded up.
I come to Dr. Vikas for the next question. That these children, as you said, would definitely normalcy is something which we really look forward for. And I know there are some amazing students out there who have just shown brilliance in every field of, whether it is music, whether it is swimming, whether it is taking up a world challenge, being autistic, and being into this part of the spectrum. But doctor, I would like to ask you, carrying out day-to-day normal activity, having an interaction with everybody, people, why do people, why is that label stuck to them? How can we remove that label? Can you help us on this? Can you repeat the question again? I said that people, kids with autism are actually flourishing in nature in all the areas in the world today, be it swimming, be it, achieving goals at the high in sports and everything. But because special child, okay, this kind of a tag which comes to them since the childhood, it gets carried along for the entire life. Can we just can we show their achievements just like any other normal child and make them feel proud? Will you help me to understand, can we remove this label autistic child? Yes, yes, definitely we can remove this label. ये लेबल तो जैसे है कि मतलब हम लोगों की तरफ से एक टैगिंग है, बट ये टैगिंग ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस टैगिंग शुड बी ओनली ऑन पेपर्स, नॉट ऑन द लाइफ. और ऐसा नहीं है, विद थेरेपी द ऑटिस्टिक चाइल्ड परफॉर्म वंडरफुल. ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मान लीजिए स्पीच नहीं है, लेकिन उनका आईक्यू इतना हाई है, दे कैन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट थिंग. बिकॉज सो दे ऑटिस्टिक डजंट मीन कि उनका एक पैरामीटर ही कम है. इट डजंट मीन कि पूरा पूरा स्पेक्ट्रम में है. तो वो हमें वो सिर्फ पैरामीटर इंप्रूव करना है, दे कैन लिव नॉर्मल लाइफ. अगर उनका अर्ली इंटरवेंशन, जैसे डॉक्टर नेहा ने ये बोला कि अगर हमारी स्क्रीनिंग में if they are caught very early, and if it is like we grade it like mild, moderate and severe. If it is a mild variety, so with therapy and all they can do very well. That is wonderful. So, Dr. Neha, I come to you. What are the kind of therapies which are involved in helping a child with autism, or if a child is newly detected, how the staging would go, and how would we be able to provide help to the parents? Right. Before I tell you the whole procedure, how to detect and what sort of therapies you could start, the question you asked, can we remove the label of autism or something? Actually, this is a taboo with the mental health conditions. People do feel that the somebody who is depressed has to be Mr. Depressed Sharma. Actually, it is not like that. It is just a phase. If you are going through something, if I had a fever, you cannot call me Dr. Neha fever. It's actually the phase which a child has to go through. And even you have to understand that the child who had autism or had some issues, you find it as a problem. But basically, it is an add on activity that God has given to your child. That He is Okay. not making you feel anywhere, He is enjoying in His whole life. So there are many parents who are working, who feel like, मैम मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया. अरे आपने इसलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी. आप अपना काम कर रहे थे, आपको पता ही नहीं चला कि बच्चे को जरूरत थी. So actually, it's not something to be worried for or to label the child like that. These kids are absolutely special because they are more loving और आपने उनको ज़्यादा प्यार किया है जब वो आपकी tummy में थे. So don't worry about it and don't label your child at all. And there are many examples around that prove that autism is not a problem. It is a phase that can led by if you will give them proper care. Now let's talk about diagnosis. अगर आपको अपने बच्चे में ये 5 से 6 सिम्टम्स 3 साल से ऊपर नजर आते हैं, पहले शायद थोड़ा डिले हो सकता है, बोलना थोड़ा लेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये 5 जो मैंने रेड फ्लैग बताए ये दिख रहे हैं, then don't delay it. Either go to your general physician or go to neonatalist, as well as go with your pediatrician and go and talk to them. Maybe they'll say कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं और रुको. लेकिन अगर 3 से 3.5 साल की उम्र है, then go to your pediatrician and tell him to write a autism spectrum chart and a psychological test for you. Once I'll get the prescription, being a clinical psychologist or a child psychologist, a counselor cannot assess. Okay. Only a child psychologist who is registered by RCI, which is a
like MCI for doctors, so RCI for psychologists. Only those who are registered has the authority to label or maybe diagnose. जैसे हम किसी भी फीवर को डायग्नोस कर रहे हैं या कोविड को डायग्नोस कर रहे हैं, तो जैसे कोविड हो गया वो कोविड नहीं रहेगा हमेशा, तो डायग्नोस हो गया. Then we'll start with therapy. There are basic 3 therapies for the autism child. यूजली ऑटिज्म गेट एसोसिएट विद हाइपर एक्टिविटी. बच्चा अपने में भी रहता है और बहुत तेज होता है, इधर उधर भाग रहा है, तोड़ रहा है चीजें. अगर सिर्फ ऑटिज्म है देन इट्स क्विकली रिजॉल्वेबल. लेकिन अगर हाइपर एक्टिविटी भी है देन द 3 therapies हैज टू गो वन बाय वन. So it's very important. First is the occupational therapy. I'll tell you what is occupational therapy. Second is your ABA therapy, which we call as behavior therapy. And third is the speech therapy. And the next can be the scheduling of ADS, that is activity of daily living. This has to go one by one. Schools are appropriately okay with this child. अगर ऑटिज्म के साथ हाइपर एक्टिविटी है तो टीचर शायद बोले मैम ये टिकता नहीं है, छेड़ता है, मारता है, पीटता है, तो उन बच्चों को शायद स्कूल नहीं लेता या थोड़ा डिले करता है. ऑटिज्म के बच्चों को टीचर्स रख के बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो किसी चीज में कुछ पूछते ही नहीं है, कुछ खेलते ही नहीं है, तो हर टीचर कहती कोई बात नहीं है बच्चा मैं संभाल लूंगी. बट आपका बच्चा अगर एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो प्लीज डोंट सेंड देम टू स्कूल. स्टार्ट विद द थेरेपीज फर्स्ट. ओके. So occupational therapy is something where you are lowering down your child energy and making them sit and interact with the world. This is called occupational. Right. It's more about their energy. You are telling them to bring a ball. You are telling them to play on something. You are telling them to pull a rope. It is called occupation. Occupation is something called work or job. An occupational therapy. इसके लिए occupational होते हैं. Especially the area I'm dwelling at, Haryana, Hisar, where the people don't know what is occupational therapy. So I tell you, take lots of sand, go to your khet or something and tell your child to do lots of sand activities, lots of floor activities. So that is also a part of occupational therapy. Those parents who couldn't afford, नहीं जाना चाहते, तो अपने बच्चे को थकाएं. This occupational therapy has this behind. Second is the behavior therapy. Once your child gets down to normality, उसका एनर्जी कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा देखने लगेगा. And how you can trace कि occupational काम कर रहा है? जब आपका बच्चा आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, सोशल स्माइल कर रहा है. I'm looking at you, Dr. Pooja, I'm smiling. And this is what a sign that I'm interacting with you. Your gestures are giving me importance. So जैसे ही वो बिहेवियर थेरेपी शुरू हो जाएगी, टेबल मैनर्स क्या है, बैठना कैसे है, टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करनी है, कोई आए तो उसे ग्रीट कैसे करना है, that is all a part of behavior and interaction. And it also comes with special education. जैसे आप flap cards दिखा सकते हैं, देखो what is this बच्चा, this is carrot, this is balloon. So it also starts with interaction. This flap cards, this cards helps in interaction, gross motor skills, understanding, color tracing, and your language. Okay. Third can be a speech therapy. तो स्पीच थेरेपी में आपको बेसिकली सिलेबल्स पे काम किया जाता है, फोनिक्स पे काम किया जाता है, ताकि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी ना हो, जैसे डिस्ग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम, द वे वी सॉ इट तारे ज़मीं पर. तो ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम आगे ना हो जाए, इसलिए वी स्टार्ट विद स्पीच थेरेपी आल्सो, सो द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड एंड राइट वेल. Along with the daily living, जैसे उनको पता हो कि मुझे इधर उधर सामान नहीं फेंकना है, खाने को कैसे खाना है, and to live independently without a mother and a father support, and to go well at school is what these therapy teaches. Okay. That was such an interesting insight onto the way we proceed. Dr. Vikas, I am coming to the next सेकंड में question. एक ऐड करना चाहता हूँ. डॉक्टर नेहा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें 2 से 3 साल जो भी बच्चा कुछ भी आपको लग रहा है कि इनडिफरेंटली बिहेव कर रहा है, तो हमें पीडियाट्रिशियन के पास आना है. द प्रॉब्लम विद द कम्युनिटी इज कि कम्युनिटी में पीडियाट्रिशियन तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है. करेक्ट. रीजन ये है कि घर में दादी है, नानी है, वो बोलती है हमारे बच्चे ने ये इस टाइम पे किया था, उस टाइम तक तो ये भी कर देगा. राइट. तो जो ये ट्रेंड है कि उसके बच्चे ने, उसकी दादी ने बोला, मेरी ननद ने ये बोला था, मेरा बच्चा ऐसा हुआ था, तो ये चीज जो है ना, ये हमें अपने पार्ट से डिलीट करनी पड़ेगी. बिकॉज डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होना एक अलग चीज है, और दादी ने क्या कहा, नानी ने, वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं. हो सकता है वो कई चीजों में ठीक हो, पर हर चीज में ठीक हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट होते हैं वो 5 साल के बाद अपने पीडियाट्रिशियन को अप्रोच कर रहे होते हैं. हम उसने इतना लेट क्यों कर दिया,
हमारी दादी ने बोला था कि अब तक तो हो जाता है, तुमने भी नहीं चलना सीखा था, तो तुम्हारा बच्चा भी लेट सीखेगा। ये Right. नहीं होना चाहिए। Right. जब यहाँ गलती होती है तब हमको इतना लेट हो जाता है कि वहाँ से उस बच्चे को नॉर्मल लाइफ में लाना, दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो एंड फॉर थेरेपिस्ट आल्सो। Absolutely. I was coming to that point only. मैं यही पूछना चाहती थी कि joint families है, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंस यही आता है कि बहुत सारे मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब ये पता चल जाता है, मतलब फर्स्ट साइंस जो सिम्टम्स आते हैं जो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, फिर उसके बाद एक चर्चा, मैं चर्चे का ही विषय बताऊंगी क्योंकि ये पूरे फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है एंड मेनी पीपल गिव मेनी मेनी सजेशंस। तो यहाँ पे माता और पिता का जो थॉट प्रोसेस होता है वो इतना कंफ्यूज क्रिएशन हो जाता है एंड द मदर एंड द फादर डोंट अंडरस्टैंड रियली इन व्हाट वे वी आर सपोज टू गाइड देम। सो apart from the child, Dr. Vikas, is there anything where there is something called as a family counseling also involved, where the parental counseling, जहाँ पे पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करने के लिए भी कुछ टिप्स दिए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए ऐसा सच बोलूंगा तो मतलब सबसे करीबी अगर कोई किसी बच्चे के लिए होता है वो माँ है। तो जो मदर होती है वो बहुत ही गुड ऑब्जर्वर होती है। राइट। तो सबसे पहले पता लगता है कि यार मेरा बच्चा ये कर पा रहा है और ये नहीं कर पा रहा है, और उनके अंदर एक उत्सुकता होती है कि यार उसके बच्चे ने कर लिया, मेरे बच्चे ने नहीं किया। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मदर को ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, सो दे शुड डेफिनेटली कॉन्टेक्ट देयर पीडियाट्रिशियन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो काउंसलिंग लें अपनी सासू माँ से या किसी और से, फिर वो बोले कि नहीं ये चलता है। क्योंकि प्रॉब्लम इज कि अगर उन्होंने काउंसलिंग ठीक की देन इट इज ओके, बट जो पार्ट डिले हो जाता है तो 3 या 4 साल बाद दे विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक। Who will be held responsible is the parents. So मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्ट अगर आपको 1% भी डाउट है कि समथिंग इज रॉन्ग विद माय चाइल्ड, आपको 1% भी हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए किसी के पास विजिट करने के लिए। मैं ये नहीं बोलता इफ द लाइक बहुत लोगों को एक फाइनेंशियल इशू हो जाता है कि यार डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन इज ओनली अवेलेबल इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सब प्राइवेट क्लिनिक्स। तो जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में ही जाएं। देयर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पे पीडियाट्रिशियन बैठे हुए हैं, दे नो द बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट। सो अगर आप उनके पास भी जाएंगे, दे कैन काउंसिल यू, दे कैन गाइड यू, दे कैन शो यू द पाथ। राइट। ओके। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आपको पता चल गया है कि आपके बच्चे में कोई फीचर्स हैं ऐसे, देयर इन इंडिया देयर इज ए पॉइंट कि ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। करेक्ट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसमें हो जाता है कि फीमेल को ब्लेम किया जाता है। तो ये जानना और ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि इसमें ना तो फादर का रोल है ना मदर का रोल है, और अगर रोल है भी तो दोनों का रोल है। राइट। सो डॉक्टर नेहा, योर टेक ऑन दिस फैमिली काउंसलिंग? Actually, this is very much important and it has to be mandatory. The way we teach the other ward, for example, a patient is admitted in a ward and it was always mandatory to teach their relatives कि देखो इनकी ऐसे सेवा करनी है, समय से दूध दवाई दे देना, ऐसे कर लेना, रात को ऐसे सुलाना. So similarly, the caregivers, which I tell the parents actually that I'm just to seed, मतलब एक मैं seed लगा रही हूँ, I'm just doing that, and you have to regularly water and maintain it. Then only it will able to help you. My 45 or 1 hour of session will not give that push that consistency in the home therapies would do. Yes, सबसे ज्यादा स्ट्रगल हमारी फील्ड में यही है समझाना कि आपके करने से होगा, हम सिर्फ एक पुश लगा सकते हैं. Actually, we have to aware them. After every class of mine they come and ask, हम देखते हैं आप क्या करा रहे हो, हम चीजें से देख सकते हैं, हम कैमरा से देख सकते हैं. अच्छा फिर हम ही करा लेंगे, फिर आप क्या करा रहे हो? For example, I'm telling them to go with the block exercise. It's very easy. Which usually an autism child do very nicely because they do stereotypic activities again and again. तो अगर मैंने उन्हें ब्लॉक करना सिखाया तो मे बी 24 घंटे वो ब्लॉक कर रहे हैं, तो जैसे ये तो उनकी करा लेंगे, इसमें व्हाट्स द बिग डील. द पॉइंट इज मे बी दे विल कम बट दे विल नॉट रिपीट. देयर आर नो फॉलो अप एंड दैट लेड्स टू अ मैसिव फॉल. एक बार आप शुरू कर रहे हो एंड देन नॉट, इट्स दैट
as if somebody coming to a dietitian, एक महीना तो खुद ही कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत? And this actually Correct. happens. So you need to understand it is a process. If a problem got extended after a period of 3-4 years, it will take at least 6-7 months to bring a result. So yes, all this occupational therapy and something goes in a series, maybe 2 sessions in a week, 1 session in a week, depends on the extent of a problem that needs to be done. A parent has to be all the way supported. अगर आप बच्चे को थेरेपी में हो या बच्चे को नहीं बोल रहे हो, अपने हस्बैंड को बोल रहे हो that what kind of child it is, मैंने तो बोला ही था that you should have bought it, or maybe I don't like it's wasting my time, I'm wasting my energy, that actually your child is listening to it. उसका कम्युनिकेशन वीक है, उसका लिसनिंग वीक नहीं है, वो सुन रहा है, बस वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी डेवलप नहीं है. Stop blaming. Rather than blaming the mother, the father, and everybody, stop blaming your child about his problem. This is just, I'm again saying, this is just a phase that can be corrected through proper interventions and care and love. Right. Dr. Vikas, I have a question from one of the users. My Oh. child is around 3 years old. This is the user who is asking. My child is around 3 years old. I do find him, not speaking much and not interacting and secluded in one area of the room. Okay. But when he is out in the society, he expresses himself very nicely and very friendly. So do I understand that my child is autistic, or do I need to get myself tested or something? How do I what do I do? This is one of the questions. देखिए, जैसे पहले इस टॉक से पहले ही डॉक्टर नेहा ने बोला कि इन बच्चों की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं. Right. और द मदर इज सेम आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि वो अपने कमरे का एक कोना पकड़ लेता है, उस कोने में उसको पूरी दुनिया दिख रही है. बाहर जा रहा है तो बाहर जाने के बाद उसको पूरा ओपन स्पेस है, तो वी कैन नॉट लाइक से कि हाँ भाई अब तो सब बढ़िया है. ठीक है, अगर वो अपना एक कोना पकड़ के कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एंड उसकी अगर लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर एज नहीं है, जैसे 3 इयर्स का बच्चा है तो उसको कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस छोटे छोटे बोलने आने चाहिए अब तक. अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, डेफिनेटली इट इज अ रेड फ्लैग साइन कि वो किसी ना किसी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करे, सो दैट वो इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि सच में कोई थेरेपी या कोई इंटरवेंशन की जरूरत है या इट इज नॉर्मल. क्योंकि जिस तरह से वो बोल रही हैं कि कुछ बोल पाता है कुछ नहीं बोल पाता, तो इससे हमें एग्जैक्ट नहीं पता पाएगा कितना बोल पाता है. हर एज लिमिट के लिए एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी होती है कि 2 साल का बच्चा है तो वो ये चीजें बोल लेगा. जैसे हम लोग बोलते हैं कि 9-10 मंथ्स के आसपास वो एक सिमिलर वर्ड्स रिपीट करने लग जाता है, पापा, दादा. तो ऐसे 3 मंथ्स के आसपास उसकी एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी होती है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने लग जाता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो बोलने लग जाता है. अगर वो है तो देन इट इज वेरी नॉर्मल, अगर नहीं है तो देन डेफिनेटली उनको किसी ना किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए. Okay. Dr. Neha, I have one question from a user. I had done a therapy for my child for 2 years, but because of COVID and the centers being up down, I tried to do it somehow, but it did not work out. Now I want to retrieve it for the child going to the center physically. Do I need to start from the very beginning, or do I need to start from where I had left? Please guide me. Definitely, you need to start from the very beginning because these therapy doesn't have a chart. It's not like Okay. सीख ली है तो आपको डी से दोबारा शुरू करना होगा. The child has already established and already being he is doing, the therapist will definitely assess the current situation and start from there onwards. There is nothing like 5 हो गए हैं 15 में से तो 10 ही आगे कराने. Maybe once you join back, they'll say 15 more. So it depends on the current situation. There's nothing like 1 second, step 1, step 2, and syllabus. Fine. Thank you. Thank you, Dr. Neha. Dr. Vikash, one last question to you. My first child is autistic, and I am about to deliver my second child. Would it be possible that my second child is also autistic, or would he get influenced with the first one and start showing behaviors? Could you guide me on this? This is from a user. See, if their first child is autistic, there are higher chances that their second child will be autistic. But it is not कि 100% होगा. The chances will increase, but it is not 100%. But
there are interventions through which we can know. So बहुत सारी genetic screening होती हैं, बहुत सारे tests होते हैं. So through those tests we can run those panels and all that thing. और अगर पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो there are some genetic causes of autism. तो अगर वो चीजें नहीं है तो we can plan for the next pregnancy. ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट एक जेनेटिक काउंसलर से आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए. Okay. Dr. Neha, I have a question for you. I have 2 autistic kids and I am being blamed constantly for the same. Can you help me to face the society in such manner? I know this is difficult as a mother to have 2 autistic kids and going to them or maybe taking them to the therapy. But trust me, after 10 years of the child's growth, if you are continuously working in right direction, after 10 years, I'm sure you must be proud on them. I always tell all of my clients, not just there is having an autistic child, even if the mother has a cerebral palsy kid who is have an extreme MR and mental retardation, I always tell them, that God has given you chance to be an example in the eyes of people. No one gets that. If you are born with something, if there is any deficiency, any flaw you are born with, you have an opportunity to be an example. कि देखो इस फ्लॉ के साथ कहीं आ रहे हैं. I think initial days can be little difficult, but prove the right person who has to come with the same panelist and show the people. Being a mother of 2 autistic people, I have proved, and my kids are excelling, and we'll be proud to have you. So don't feel degraded, don't feel low. I guess this is your chance to prove. The people who comes up with an acid attack to me, then पता है आने लोगों को प्रूव करने का कि तुम एसिड अटैक के बाद भी सरवाइव कर रहे हो. सो टेक इट एज अ मोटिवेशन, prove the people, and trust me, your child will make you feel so proud. Thank you so much for your inputs. So it was lovely having you, Dr. Vikas and Dr. Neha. The insights that you provided were very, very valuable, and I'm 100% here to tell you that Baby Chakra really supports the awareness that we need to create for people who have just found out the child is autistic. We should not label them. They are very, very normal, but the SQ factor, I would say that is a special factor with more of love, more of patience, and more of dignity is what we need to treat them with. I'm very blessed to have this live chat with you on this session and on this platform. I deeply thank you from the bottom of my heart and take all this pleasure to join you for more coming live sessions on these more interactive topics. Thank you for your valuable time. It was lovely having you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.